क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन ऑफलाइन क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च इज बीइंग डन फॉर ट्रीटिंग द डिफरेंट सपोर्ट्स इंजरी। Treating the supports injury are treatments for the different research and new techniques used to treat the supports injury। और उसके बाद ये हमने कल भी पढ़ा था और लिटिल बिट हम पढ़ेंगे हीट रिलेटेड इलनेसेस, द डिजीज एंड डिसऑर्डर्स या इलनेस रिलेटेड टू हीट। अगर हम देखेंगे टुडे सपोर्ट्स इंजरीज आर वेरी कॉमन। इससे पहले भी हुआ करती थी बट इट हैज बीन रिसर्चड, इट हैज बीन मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा द पीपल्स मेक मच मोर रिसर्च प्रोस्पेक्टिव्स, मच मेक मोर एविडेंट, मच मोर मेक कॉन्फिडेंट। तो इस चीज के लिए खोज की गई कि वी हैव टू रिसर्च द न्यू एंड गुड एंड मॉडिफाइड मॉडर्न टेक्निक्स in order to treat the supports injuries या other injuries, accidents। The supports injuries can be treated by the different, जैसे कल हमने पढ़ा था जैसे कि रेस्ट आइस, कायरोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, but there are so many times there are severe injuries। The injuries can be much more tough and sometimes these injuries may have to treat in the medical hospital, in the medical emergencies, at the medical emergencies hospital. Yeah, some experts have to look these places to these supports injuries. There are so many techniques by which we can determine the actual factor cause of these injuries and by which we can prevent, by which we can treat these injuries. Number first जो मैंने अभी लिखा है arthroscopy. A new technique has been introduced for treating the supports injury, that it's a fiber optic scope होता है through which by which we can make the cut over the skin and we can enter this, we can put this into these cuts and we can see the image of our joints, of our bones. So arthroscopy is a technique to determine the cause and the location and the type of fracture and the type of injury. Good, this is a technique that has been introduced to determine and to know the exact what kind of injury it is and where it is located. Go arthroscopy, optic fiber scope इंट्रोड्यूस किया जाता है थ्रू द कट्स ओवर द स्किन के ऊपर से जब कट्स लगाए जाते हैं इसको इंटर किया जाता है। इससे क्या हो जाता है टू सी इनसाइड द जॉइंट्स, इनसाइड जॉइंट्स के। नंबर 2 टिश्यू इंजीनियरिंग जिसे बोलते हैं। नंबर 2 इट्स अ टेक्निक दैट हैज बीन यूज्ड टू ट्रीट द डिफरेंट सपोर्ट इंजरीज। Tissue engineering means using a person's own tissues या cells to heal his injuries। जब whenever there is a grave injury तो उससे क्या हो जाता है they will replace their tissues, their cells from one place to another, वहाँ पे लगाएंगे the transfer of tissues and cells that will heal them, that will then he will get good, then he will heal very soon। The tissue engineering is another technique that is used. Number 3 that is the target pain relief। Target pain relief means the use of drugs, the anabolic steroids, the swelling के लिए, pain के लिए, इसके लिए नए drugs and the drugs are much more helpful। Yeah, simply sometimes the lotion can be used, sometimes pain relieving lotions, pain relieving drugs, these things can be used, sometimes drug patches but directly on the injury, some patches भी लगाए जाते हैं। These are the techniques that were used। Number 4 इसमें और एक technique that determines the cause of injury and that determines the exactness of the injury, that determines एक तो exactness, number 2 that determines the kind of injury, mild है, severe है, कैसी injury है। वो होता है कि advanced imaging techniques एक्सरे किए जाते थे। नाउ इट्स डिजिटल एक्सरेज आर यूज्ड टू मेक बेटर डायग्नोज अच्छा, वो ट्रीटमेंट भी अच्छा करने के लिए थी इसका फैक्टर। अगर हम थोड़ा सा इसी के बाद बढ़ेंगे
इलनेस, हमारा जो टॉपिक था वो फिजिकल एजुकेशन का, वो था ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज, बट द टॉपिक इज हेयर कि सपोर्ट्स मेडिसिन हम पढ़ रहे हैं। सपोर्ट्स मेडिसिन में देयर द डिफरेंट काइंड ऑफ इंजरीज। आज हम पढ़ेंगे वो है दैट्स हीट रिलेटेड इलनेस, द कॉजेज, the diseases, the disorders and the illness caused by in extreme heat conditions, in extreme hot weather conditions. Athletes are especially susceptible to heat related illnesses क्योंकि when there is extreme heat या extreme wind, extreme humidity होगी या extreme coldness होगी, there may be some kind of disease and deformities and some kind of illness, some kind of disorder. But today we are related it to the heat related illness. क्या होती है? Number first, it may be cause dehydration. Number two, it may be cause heat exertion. Number two, it may cause heat stroke. While exercising in hot weather, while playing, while exercising, while warm upping, while taking part in some other activity, there may be some illness, a serious illness for an athlete. But we have to prevent these illnesses. How we can prevent it? When there are the signs. If there are the warning signs and symptoms of these related illnesses, for example, we will feel that our body needs much water, we feel dehydration, we feel less water, then it has very importance. It means a sign. If we feel extreme sweating, if we feel extreme exertion, then these are the signs. Then we have to avoid the games. कल हम पढ़ेंगे इसको, and after that we have to ignore the games if these warning signs are ignored. If these warning signs are ignored, अगर हम इनको ignore करेंगे, then there may be the much more life-threatening heat emergencies. Life-threatening कुछ भी हो जाएगा, life-threatening injuries will be happen. कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसके आगे.